Hello. So today is Monday and I'm coming off a very bad weekend. I originally had planned for playing football with friends, but the weather in Bangalore was it felt like it would rain the whole Saturday, like there were clouds since the morning, and we had planned for 4 p.m. and it rained exactly at 4 p.m. And I know that football is more fun in rain, but my friends didn't want it to get wet, so I had to cancel on that. So I went to my backup plan of watching movies. And mostly I watch movies on YouTube or on Telegram or some pirated sites or some shady websites because I don't like to pay for subscription for movies because if you get it for free then it's good. The only thing I pay subscription for is music, that is Spotify. That is not much, it's like 30 rupees per month in a family plan. And I think it's the only valid payment I do, like the only most valid spending I do because I listen to music all the time, like 24/7. I'll show you. Uh, I think, wait, fuck this notifications. I listened for 2,604 minutes, and last month I almost listened for 5,000 minutes, so it's worthy to pay for it. For movies, like I like movies more than music, but it doesn't make sense to me to pay for it. So, okay, I'm getting dragged away from the original point. So I went to YouTube and I thought, what should I watch today? And I was in the mood of a Bollywood. So I searched and like I think a video was popped up in my recommendation regarding the review of Cocktail 2. So I thought, okay, let's see, I'll watch it in theaters. But for the context, I thought I'll watch Cocktail 1 or the original movie. So I started it. I think it was only 7 to 10 minutes into it, and I just couldn't bear it. Like I had to quit it. So it starts something like it's, there's an Indian in London, and he'll do all those things which he thinks is spooky things or very cute things. Uh, Catching strays and talking to random girls. There's nothing wrong in that. Like suppose the scenario is तुम एक बाहर के देश में like the लड़की lands in London बाहर के देश में from India. She is landing for the first time, and suddenly you get a guy, like even though it's Saif Ali Khan, doesn't matter. A guy just comes up to you and acts like he has seen you somewhere, and अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम मुझे भूल गए. This is bullshit to me. Like I know it's movies and I shouldn't view it with the critical lens. I'm not viewing with a critical lens. I'm just saying that normally what happens is uh, this is movie. I know it, but okay, I'm not generally talking about me. Like not to brag, but I'm a very intelligent viewer. I know what to differentiate between what's real and what's fiction. Most of the people in India can't do that, so they learn from movies and like uh, I wouldn't say molesting girls, but लड़कियों को परेशान करना, all that things. It's been so normalized in movie. Like just first 10 minutes of the movie and he's already like normal अनजाने लड़के से ऐसे बात करने में इशू नहीं है, but लाइक तुम देखोगे ना तो तुमको क्लियरली समझेगा कि काइंड ऑफ उनको परेशान कर रहा है और दे आर नॉट कंफर्टेबल मे बी बट द लिसन टू द बैकग्राउंड म्यूजिक जानबूझ के ऐसे जॉली ऐसे मूड का दिखाएंगे कि सब एवरीथिंग इज नॉर्मल लाइक इमेजिन द सिनेरियो देख एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही लाइवली म्यूजिक चल रहा है हैपनिंग म्यूजिक चल रहा है सो यू डोंट फील दैट एनीथिंग इज रॉन्ग विद इट एंड यू जस्ट एंजॉय सपोज द सेम सिनेरियो इज हैपनिंग और बैकग्राउंड में एकदम टेंस्ड म्यूजिक एकदम देयर इज नो म्यूजिक मे बी देयर साइलेंट लाइक रियल लाइफ में कैसा होता है कि सम यू आर सीइंग समवन कि एक लड़का लड़की को परेशान कर रहा है और कुछ म्यूजिक नहीं बज रहा रियल लाइफ में तो you see that what's happening wrong and you feel it that something is happening wrong. So I don't know in why in movies they try to add those music to. There's nothing wrong with background music. The point is कि they present us in a way that there's nothing wrong in these things. Obviously there's wrong. So I couldn't watch Cocktail for more than 10 minutes. So the verdict is I'm not watching Cocktail 2. That's not the important point. I switched to another movie, Saath Khoon Maaf by Priyanka Chopra. It's based on Ruskin Bond's book, Susanna's Seven Husbands. This was a pretty good movie.
And this is where I'd like to touch upon the point that, like, very often we see people comparing Bollywood with Hollywood, and Bollywood movies are trash compared to Hollywood. The thing is, I like to blame it on audience more than the people who make films. Both are equally responsible, but I believe that audience is more responsible. Uh, अब आप अभी यूट्यूब पे जाओ और फिल्म रिव्यूज सर्च करो. The top reviews of the films which you'll see in recent time as of June 2026 it will be पति पत्नी और वो दो, और वरुण धवन्स मूवी है जवानी तो इश्क होना ही है, और this cocktail 2, and some random bullshit movies which, okay, like, I get it that movies are made for a specific audience and not every movie has to be masterpiece, Interstellar or Batman or Shutter Island or something like that. There are types of audience for which this particular movie is made. It is made for fun. But the thing is, people give more attention to that. और एक मूवी आई है रिसेंट टाइम्स में, आई थिंक इम्तियाज अली की, बेस्ड ऑन द, आई थिंक अराउंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, द पार्टीशन स्टोरी. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट मैंने उसका भी रिव्यू देखा था. व्हाट्स माय पॉइंट इज की, मतलब मैं मूवीज का बहुत कंटेंट देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे को रिकमेंडेशन में आई थिंक एक रिकमेंडेशन में तो बस उस मूवी के रिव्यू का आया था, और बाकी 10-15 अननेसेसरी रिकमेंडेशन से फालतू मूवीज के आएंगे. लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बट नो वन वांट्स टू वॉच सम एक्चुअल गुड मूवी एंड रिकमेंड दैट. द थिंग इज, इंडिया में है अच्छी मूवीज, बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी मूवीज है. फॉरगेट अबाउट एंटायर इंडियन सिनेमा, इफ यू जस्ट वांट टू वॉच बॉलीवुड, देयर आर प्रीटी गुड मूवीज. एंड मतलब मैंने लास्ट मंथ में बहुत अच्छी बॉलीवुड मूवीज देखी है. सात खून माफ आई लाइक रियली, एंड आई वॉच्ड इश्किया, नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और विद्या बालन थे उसमें. आई वॉच्ड आनंद, इट्स वेरी ओल्ड मूवी 1975 की आई थिंक, अमिताभ बच्चन और आई डोंट, राजेश खन्ना, हाँ. तो मैं पूरे फैमिली के साथ लाइक ऐसे टीवी पे देख रहा था. नॉर्मली मैं फोन पे ही देखता हूँ, बट दिस मूवी वाज सो गुड लाइक. और मैं नहीं लगा, जैसे नहीं कि किसी ने लगाई और मैं देखने लगा. मेरे को पसंद है लाइक ऐसे ढूंढ ढूंढ के मूवीज देखना. ऐसा नहीं कि कुछ भी मेरे सामने परोस दिया जाएगा तो मैं कुछ भी बकवास खा लूंगा. आई लाइक टू डिग डीप, फाइंड द बरीड treasures and all that. So the thing is कि अगर इंडिया में 500 मूवीज बनती है, पाँच या 10 अच्छी बन रही है, तुम लोग को देखना है वो 490 मूवीज और बस उसको खराब बोले जाना है. प्रॉब्लम ऑडियंस में ही है. I'm sure there will be filmmakers in India who will like spend their entire lives earning on a film, and they'll make a really good film which will be watched by a total of 12 people. He'll go bankrupt. He'll not be able to do anything for the rest of his life because he was so passionate about that film. He made that, spent his entire savings, and made a really good film. But no one wants to watch it. Like barely a few people will watch it. That movie won't even earn thousand, let alone lakhs or crores. So the problem is वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग, नॉट जस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब कोरियन मूवीज, चाइनीज मूवी, आई एम नॉट श्योर, कोरियन लाइक इटालियन मूवीज, फ्रेंच मूवीज या हॉलीवुड स्पेशली, उधर उधर लोग सब टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया में मूवीज का वो बन गया है कि हमको बस हमारे लाइफ के या डेली के टेंशन से दूर होके बस हमको मूवी देखने जाना है. तो हमारा लाइक डिफॉल्ट माइंडसेट कैसा रहता है कि हमको बस रिलैक्स करके देखना है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बस. और ये सही भी है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा. बट द थिंग इज वी डोंट, एज ए व्यूअर वी डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद व्हाट वी हैव टू सी. हम जाएंगे और बस एक टाइप की रिपीटेड मूवीज देखेंगे. मतलब ये क्या, वरुण धवन की जो लेटेस्ट मूवी आई है उसमें क्या नया एलिमेंट है, मेरे को वो ये बता दो. मतलब कुछ भी नया नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्रेलर देखा, बट ट्रेलर से मैं बता सकता हूँ कि वो कौन से टाइप की मूवी है. लाइक आई डोंट थिंक इट इज इवन फनी लाइक. और लाइक अभी रिसेंट में तो रामचरण की मूवी आई थी पेद्दी, तो उसके उसके तो बहुत ही खराब रिव्यूज सुने मैंने. और साउथ में तो बहुत कॉमन है लाइक वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड ऑल दैट, अभी भी होता है. एंड आई एम श्योर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल भी हीरो के हाथ में ही होता है. ही चूजेस टू पुट ऑल दिस थिंग्स. आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर खराब मूवीज, देयर आर बैड मूवीज, देयर आर गुड मूवीज. इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू वॉच. यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारी अच्छी मूवीज अवेलेबल है इंडिया में. यू कैन वॉच दैट. मैंने एक लिस्ट भी बनाया था, आई विल शो यू दैट.
think these are the movies I watched. Like Sarkar is good, Company is good. Okay, that girl in yellow boots. It is of Kalki Kochli. Yes, I think this was one of the best movies I've watched in very recent time. Like मतलब ऐसी movies I don't think we normally हम बॉलीवुड में एक्सपेक्ट भी करते कि बने. कल की कोचली की और एक मूवी शैतान जो आई थिंक डायरेक्टेड बाय कौन है उसका हस्बैंड या था, नाम भूल जाता हूँ मैं अक्सर. अ, अनुराग कश्यप. 2011 की मूवी है और वो मूवी भी काफी अच्छी है. लाइक ऐसे जॉनर्स की मूवी वी रेयरली सी. लाइक आई डोंट नो, मतलब मूवीज बनती तो है, श्योर देयर आर मूवीज बीइंग मेड. इट जस्ट कि हम उसको देख नहीं रहे और से अप्रिशिएट नहीं कर रहे और फिर हमको खराब मूवी देखनी जानबूझ के और फिर उसको ट्रोल भी करना है. तो प्रॉब्लम इज बोथ वेज. यू चूज व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट फाइन. लाइक सही में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो बहुत अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी फ्री में. एक पैसा भी खर्च करने को नहीं बोल रहा मैं. जाओ अच्छी मूवीज देखो. ये फालतू मूवी बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम मूवीज तो एटलीस्ट मत ही देखा करो. लाइक ठीक है कभी कभार ऐसे बहुत ही बोर हो रहा है और तुमको बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाना, बस बैठ के ऐसे बैकग्राउंड में कुछ तो मूवी चल रहा है और आप अपना भी कुछ काम कर रहे हो. ठीक है तो कभी कभार देख सकते हो. मतलब मैं किसी मूवी को हेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वॉच गुड मूवीज सो यू डोंट स्टार्ट डायरेक्टली ब्लेमिंग देम. स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ फर्स्ट. पहले खुद से स्टार्ट करो अगर कुछ भी क्रिटिसाइज करना है तो. रिफ्लेक्ट योरसेल्फ एंड देन दूसरों को बोलो. थैंक यू. एंड if वीडियो स्लो लगे तो maybe you can watch on 1.25x. that should be the default. मैं एडिट नहीं करता वीडियोस को बिल्कुल भी. मैं बस रिकॉर्ड करता हूँ और डाल देता हूँ. लाइक इट इज 6:47, 22 जुलाई 22. हाँ और अभी मैं पोस्ट भी कर दूंगा, बस अभी एंड बटन पे दबा रहा हूँ.